I hope you will be fine in this pandemic and you will be taking care of your health. So today I am starting a new series of NCERT Exemplar Class 11 Biology. So basically स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न. हम इसके MCQ बेस्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे सिर्फ, क्योंकि नीट में बेसिकली वही पूछे जाते हैं. So let's start with the first. Meiosis results in production of gametes, reproduction in number of chromosomes, introduction of variations, yeah, all of above. So guys, I am giving you 5 seconds. Think about it and then I will start next question and tell the answer of this question too. So guys, answer to this question is all of the above. That is कि मियोसिस जब होती है गैमीट्स भी बनते हैं, क्रोमोसोम्स में भी रिडक्शन होती है, क्रोमोसोम के नंबर में भी रिडक्शन होती है और वेरिएशंस भी आती हैं. आगे सेकंड क्वेश्चन, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट इज फाइनली डिसाइडेड? मेटाफेज 1, एनाफेज 2. Meiosis occur in organisms during sexual reproduction, vegetative reproduction, both sexual and vegetative reproduction, या none of the above. So answer to this question is sexual reproduction. So guys, let's move to the fourth question. During anaphase 1 of the meiosis, homologous chromosome separate, non-homologous chromosome separate, sister chromatid separates या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट. तो इसका आंसर है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट. माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन, बोथ या नन. तो इसका आंसर है माइटोसिस क्या होता है? इक्वल, मियोसिस रिडक्शनल. तो इसका आंसर है इक्वल डिवीजन. So guys, let's move to next question. Sixth question. A bivalent of meiosis 1 consists of 2 chromatids and 1 centromere, 2 chromatids and 2 centromere, 4 chromatids and 2 centromere, or 4 chromatids and 4 centromere. So the correct answer is 4 chromatids and 2 centromere. Cells which are not dividing are likely to be at G1, G2, G0 or S. So इसका आंसर है G0, that is quiescent phase. Which of the events listed below is not observed during mitosis? Chromatin condensation, movement of centriole to opposite poles, appearance of chromosomes with 2 chromatids joined together at centromere, or crossing over. So इसका आंसर है crossing over. Okay. So let's move to next question. Identify the wrong statement about meiosis. Pairing of homologous chromosome, 4 haploid cells are formed. At the end of meiosis, number of chromosomes are reduced to half. Here 2 cycle of DNA replication occurs. So ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना और मैं सबका कमेंट्स का आंसर दूंगी. Select the correct statement about G1 phase. Cell is metabolically inactive. DNA in the cell does not replicate. It is not a phase of synthesis of macromolecules. Cell stops growing. So answer to this question is DNA in the cell does not replicate. So हमारा ये चैप्टर ख़त्म होते हैं और अब हम नए चैप्टर पे आएंगे. तो कल हम चैप्टर करेंगे लिविंग.